मेडिसिन की बुक डेविडसन से आज चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी. ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और क्लिनिक्स में यू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, और इस चैप्टर का पूरा आउटलुक आपके सामने मौजूद है. टुडेज वीडियो विल फोकस ऑन basic points related to the clinical examination in endocrine disorder. यानी जब पेशेंट आपके पास आएगा क्लिनिक में, so what are the first observational and first एनकाउंटर जो आपका पेशेंट के साथ होगा, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लीड्स टुवर्ड द डायग्नोसिस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. सो दैट्स गोइंग टू बी टुडेज टॉपिक. देन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइंड अप फॉर द ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन, जिसमें फिजियोलॉजी की भी हम बात करेंगे, थोड़ी पैथोलॉजी की. सो दैट विल बी एन ओवर, एंड देन वी विल जंप ऑन टू द medical issues of thyroid gland, then reproductive system, and parathyroid, and all the endocrine glands basically. So going to be an extremely important chapter. Divided videos में होगा. Today's video is going to be focusing on the clinical examinations associated with endocrinology. अब देखें, ये एक डायग्राम यहाँ मैं इसका आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, the bird's eye view, so that you have an idea. So here we have the patient, and I want you to think like the author of the book actually wants you to think like. Start the patient right from point number 1 and move in a clockwise circle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. So you have to focus on 12 points when you are, obviously observing a patient with endocrine problem. Now it goes like this. देखिए, पेशेंट आपके पास जब क्लिनिक में आता है तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं बताता कि मुझे एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, और यहाँ से वो बात शुरू नहीं करता, और आपको ऐसा कोई हिंट नहीं मिलेगा कि पेशेंट आते ही बोलेगा कि आई हैव गॉट एन एंडोक्राइन प्रॉब्लम, और आप अपने दिमाग में ये वाली डायग्राम स्टार्ट करना शुरू कर दो 1, 2, 3. ऐसे नहीं होता. द वे क्लिनिक्स वर्क इज द पेशेंट वॉक्स इन ऑब्वियसली विद अ कंप्लेन. सो द फर्स्ट थिंग पेशेंट टॉक्स टू यू इज सम सॉर्ट ऑफ कंप्लेन कि डॉक्टर साहब आई हैव गॉट दिस इशू, और उस इशू से देन यू हैव टू इंटरैक्ट विद द पेशेंट, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग. सो देयर इज ऑब्वियसली अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन. सो दैट्स हाउ मेडिसिन ऑलवेज वर्क्स, वेयर वी हैव अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन by the patient, and then you obviously take history, और हिस्ट्री में फिर आपको पॉइंटर्स मिलते हैं कि कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट है. then you obviously perform examination of the patient, and in examination you have certain findings noted. Then you order some laboratory investigations, and based on these steps of medicine, then you make a list of differential diagnosis. और differential diagnosis फिर obviously जब labs के सारे results आ जाते हैं तो वो confirmed diagnosis बनती है. आप पहले preliminary treatment start करते हैं, और जब confirmed diagnosis होती है तो फिर आप definitive treatment start करते हैं. So that's how medicine works. The first thing always is the presenting complaint of the patient. कि patient आपके पास आया किस issue के साथ है. patient कह रहा है मुझे सर में दर्द है, मुझे सीने में दर्द है, मुझे एक swelling यहाँ बॉडी पे नजर आ रही है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही. All these are the presenting complaints, and from the presenting complaints you take history of the patient, and obviously the history has to be focused and mastered. यानी ये ना हो कि आप आए बाएं शायद इधर उधर के सवाल कर रहे हैं. The questions have to be very very focused. You need to make a list of good differential diagnosis ताकि आप patient का treatment accordingly start कर सके. Now the point is कि if the patient comes to you and you have an idea that we are talking about an endocrine disorder, then these are the 12 steps which you must follow. जो पहला step है, that is the observation. Observation में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? I mean, you generally look at the patient, and most, ये देखिए लिखा भी है इन्होंने, most examination in endocrinology is by observation. Astute observation can often yield spot diagnosis of endocrine problems. So for example, if you see a patient like this, you have a spot diagnosis of goiter. If you have a patient, with vitiligo, you have a spot diagnosis of some sort of autoimmune diseases, perhaps involving adrenals. So it's most of the time very much clear diagnosis just by observation. So that's step number 1. Okay. The emphasis of examination varies depending on which gland or hormone is thought to be involved. Obviously, हर gland का जो phenotypic प्रोफाइल होगा वो डिफरेंट होगा. सो अगर थायराइड ग्लैंड enlarged है, it will be a different phenotypic profile. If you are expecting a problem with growth hormone, for example, it's a different facial profile. अगर आप कुशिंग सिंड्रोम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका फेशियल प्रोफाइल डिफरेंट होगा, जो हम हर ऑर्गन हर ग्लैंड के साथ ऑब्वियसली पढ़ेंगे. लेकिन आज की वीडियो का पर्पस ये है to give you an idea that how to actually approach a patient with endocrine issues. Okay, so the first thing is observation.
और इस ऑब्जर्वेशन में obviously you start off by looking at the height and weight of the patient. So for example, if a person is coming to you with central obesity and there is a moon faced and there is a hunchback, so ये सारी चीजें point out कर रही हैं एक particular phenotype की तरफ जो कि very much common होता है in Cushing syndrome. Okay, so you look at the patient. If the person is too tall, it tells you something. If the person has short stature, it tells you something. All these sort of things are very, very important. So first thing, height and weight, or you say this, observation. So the first thing first, observe your patient. Try to make sense if there is anything very much visible in the patient. Moving from there, now you start off obviously with a clinical examination. You are looking at the patient's hand. That's point number 2. और हैंड्स पे जो चीज़ें आपने फोकस करनी है, यू हैव टू लुक फॉर कि हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब नॉर्मल अपने हाथ के साथ रख के कंपेयर कर लें पेशेंट का हाथ. जैसे एक्रोमेगैली इज अ डिसऑर्डर जिसमें देयर इज लाइक जायंट features, हाथ बड़े पाँव बड़े, so that can be very much clear. आपको हाथ अगर स्ट्रेट रखेंगे पेशेंट का और वो हिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ट्रेमर्स हैं, that can be indicative of thyroid issues. आप देखें कहीं पाल्मर एरिथमा तो नहीं है, कुछ ज्यादा रेडिश तो नहीं हो रहा है, या रिस्ट एरिया पे इस पॉइंट पर कोई खास पेन तो नहीं पेशेंट बता रहा, कार्पल टनल सिंड्रोम. So these are all important features, and obviously when you have a look at the hands, you're looking at both the palmar surface as well as the dorsal surface of the hands. Okay, so sometimes you even have to measure it. आप इस तरह से हाथ रख के किसी भी flat surface पे from the combined thumb आप measure कर लेते हैं कि maximum आपके index तक कितना distance है. Acromegalic hands, note soft tissue enlargement causing spade-like changes. तो बड़ा सा हाथ लग रहा है. So after observing, you start with the hands. Okay, so that's point number 2. Remember this diagram, guys, that's an important one. Now you have a general look all over the skin. Point number 3 is to observe the skin of the patient. So you see, are hairs distributed normally? कहीं ऐसा तो नहीं है face पे बहुत ज़्यादा hairs हैं, या there is baldness, या body पे hirsutism है बहुत ज़्यादा. So what is the hair distribution? Skin touch करने पर है कैसी? Is it normal feel, or is it very dry, or is it very oily? कहीं कोई पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं, सो देयर आर ब्लैक स्पॉट्स फॉर एग्जांपल, और इज देयर एनी वाइटिलाइगो, कहीं ज्यादा वाइटिश हो रही है. सो यू सी हियर फॉर एग्जांपल दिस एरिया इज हाइपो पिगमेंटेड एरिया, ऑल दिस चेस्ट एरिया, एक्सिलरी एरिया, नेक एरिया. सो कहीं इस तरह के चेंजेस तो नहीं है. स्किन पे कहीं ब्रूजिंग तो नहीं है, जिसका मतलब है कहीं सो सी इफ आई वर यू आई वुड थिंक लाइक दिस, इफ देयर इज ब्रूजिंग इन द स्किन, इसका मतलब उसकी स्किन में जो प्रोटीन्स हैं, जो कोलेजन है, वो सही से फॉर्म नहीं हो रहा. सो मे बी स्टेरॉइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, बिकॉज स्टेरॉइड प्रोटीन ब्रेक डाउन करवाते हैं पेरिफ्री में, लिवर में नहीं, पेरिफ्री में. गो वॉच माई फिजियो लेक्चर्स ऑन एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स. सो यू ट्राई टू लिंक ब्रूजिंग विद कुशिंग सिंड्रोम. वाइटिलिगो यानी कहीं हाइपोपिगमेंटेशन तो नहीं है, स्ट्राया. सो कुशिंग के पेशेंट्स में फॉर एग्जांपल एब्डोमेन में जब आप देखते हैं, सो देयर आर स्ट्राया ऑन द एब्डोमिनल एरिया, अगेन बिकॉज 2 reasons. Number 1, there is increase in weight, and number 2, प्रोटीन की फॉर्मेशन ठीक नहीं होती, and there is protein catabolism. So स्किन यहाँ पर जो प्रोटीन कोलेजन फाइबर्स होते हैं, they are not powerful enough, and therefore there are stria. And what is the thickness of the skin? So you now have a comment on the skin. So you started off by looking at the general observation, number 1. Then you had a look at the hands. Now you talked about skin. And now number 4. So point number 4 is you start feeling the pulse. Just put your hand over here. Feel the radial pulse. Is it the pulse of fibrillation? Is there sinus tachycardia or bradycardia? How does the pulse feel like? Obviously, जो examination की I'll actually line up separate videos for the body examination of different systems. So her part of the examination has its own gadgets, So for example, अगर आप पल्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो आपको पल्स का काउंट कितना है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी रिदम कैसी है, उसका डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरह के हैं, सो वो सब आपको एक्चुअली नोट करने होते हैं. बट फॉर एंडोक्राइन पेशेंट्स दीज आर द वेरी कॉमन वंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर थायराइड प्रोफाइल ऊपर नीचे है, तो यू मे हैव अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन और चेंजेस इन द रेट. सो यू नाउ गेट द पल्स sorted. Okay, so pulse के बाद then you start noticing the blood pressure of the patient. Is the patient hypertensive or the patient has hypotension? That's a very important information.
because if the person is getting hypertension, then you have a different set of diagnosis. Hypotension is a different set of diagnosis, and then moving around. So remember this picture, okay? So we are suspecting a patient with endocrine problem. We started off with general observation, then we looked at the hands, then we have a comment on the skin, and then pulse, and then blood pressure. And now let's have a look at the head of the patient. So is the face and head region all okay and normal, या वहाँ पे कुछ noticeable चीजें हैं? So head region obviously is a bigger region. इसमें eyes भी आ जाती हैं, इसमें hairs भी हैं, इसमें jaw appearance है, कहीं इसमें prognathism तो नहीं, jaw बड़ा enlarged तो नहीं है जैसे कि कुछ endocrine problems में होता है. So have a good look at the facial area. Eyes किस तरह की हैं? पर्टिकुलरली जब मैं आइज की बात करता हूं तो अभी अगले पेज पे आपको दिखाऊंगा. आइज में देयर इज अ लॉट टू एक्चुअली हैव अ लुक एट. सो अभी क्विक लुक देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू हैव टू लुक कि आइज फ्रंट पे देखने पर नॉर्मल है या प्रोप्टोसिस है या लिड रिट्रैक्ट. अभी थोड़ी देर में ये समझाता हूं चीजें. बट दिस पॉइंट नंबर 6 जिसमें आइज इन्वॉल्व हैं, आइज आर वेरी वेरी important in terms of picking up a patient with endocrine problems, particularly thyroid diseases के जो problems हैं वो उनकी eye manifestations are typical and they are characteristic. So जब आप patient को देखेंगे clinic में या exam में वो explain करते हैं तो you have to pick it up from there. अगर वो बात कर रहे हैं lid retraction की तो this is not without any reason. कोई ना कोई उसका reason होगा. Therefore you have to tone yourself to actually understand the eye pathology in order to pick the medical issue. Okay, so number 6 is have a very good look at the head region. Facial features कैसे हैं, hirsutism तो नहीं है, moon face तो नहीं है, even the mental state of the patient किस तरह का, ये सब चीजें cover होती हैं in examination of the head. Then have a look at the neck, because neck is it is the storehouse for thyroid gland and goiter will be very much obvious here. तो neck region देखें. How is the person's voice? बात कर रहा है तो hoarseness तो नहीं है, आवाज भारी तो नहीं हो रही. Thyroid problems में this happens, So number 7 is the neck region. Then we have a look at the chest and breast region. Is there galactorrhea? Milk तो नहीं आ रहा unnecessarily. Gynecomastia, breast tissue enlarged तो नहीं है, because these are again problems associated with some reproductive hormones. How is the body fat distributed? Because Cushing के जो patient हैं, Cushing syndrome के, उनमें there is central obesity. They have like big tummies. So how is the patient doing with the body fat deposition? How are the bones? Fractures की कोई history तो नहीं है. Patient बोले जी बार fracture होता है डॉक्टर साहब. How are the genitals? Genitals में ऐसे तो नहीं है कि female body है but they are masculinizing. Virilization तो नहीं है. Pubertal development किस तरह से है? Is everything all right? Are the menstrual cycles okay, on time? Is testicular volume okay? So how are the genitals looking is an important feature of endocrine examination. And then number 12 is examine the legs, because in legs you get sometimes important findings for particularly thyroid problems. हम पढ़ेंगे जब थायराइड डिजीज डिस्कस करेंगे. प्रॉक्सिमल मायोपैथी, दर्द तो नहीं हो रहा, उठने बैठने में यहाँ से उठा नहीं जाता, इस जगह दर्द है, इस जगह प्रॉक्सिमल मायोपैथी. Myxedema, pretibial myxedema, so they are all associated with thyroid problems such as Graves' disease. So that's a very good initial diagram in Davidson to talk about and to start actually looking at the patient with endocrine problems. Okay, so remember these 12 points. So मैं इनको कहता हूँ a dozen issues in endocrinology. So remember these dozen issues. Okay, so ये 12 चीजें हैं, आपने इसी तरह patient को approach करना है. Endocrine, लिखे important बात लिखिए. Endocrine diseases cause clinical syndromes and symptoms and signs involving many organs. ये बड़ा true है यार. देखो थायराइड के जब पेशेंट आता है ना, थायराइड का आप अगर फिजियोलॉजिक प्रोफाइल देखें तो वो बॉडी में कितने सारे सेल्स पे जाके अपना एक्शन करता है. सो थायराइड इज अ वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड टाइप ऑफ हार्मोन. इट गोज हियर एंड देयर, अफेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स. इसीलिए जब थायराइड का इशू होगा, कोई डिजीज होगी थायराइड की, तो इन्वॉल्वमेंट भी मल्टीपल ऑर्गन्स की होगी. और इसकी वजह से होता ये है कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम व्हिच इज जनरेटेड. इसीलिए आपको पेशेंट को इन द होलिस्टिक व्यू देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, and then they talk about diabetes and thyroid. देखो ये दो most common endocrine problem है. मैं ये नहीं कह रहा कि adrenal के issues common नहीं है, but if you compare them to diabetes and thyroid problems, they are the most common. In fact, if I tell you कि thyroid issues ऐसे issues हैं जो अक्सर they are underrated. They are not even diagnosed, and the patient is suffering from hypo or hyperthyroidism. Simple सी अगर आपको बताऊं, if somebody is saying कि मुझे नींद नहीं आ रही, so that नींद ना आना can be an important indication of thyroid problem.
और उसको हम रूटीनली ऐसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि चलो नींद नहीं आ रही तो ऐसे ये वजह होगी वो वजह होगी, बट these things are serious and important. You need to at least investigate them कि थायराइड ठीक ठाक काम कर रहा है. ओके, सो ये डजन इश्यूज आपने याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है. रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, डजन इश्यूज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. ठीक है, 1 दर्जन इश्यूज हैं ये, और अगर आपने पेशेंट अप्रोच करना है, दैट्स द वे टू अप्रोच द पेशेंट. पर्टिकुलरली एक्सपेंड किया है अब इन्होंने आई एग्जामिनेशन को ओवर द नेक्स्ट पेज. दैट्स इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. जब मैं थायराइड डिस्कस करूंगा आपसे इन्हीं वीडियो सीरीज में आगे मेडिसिन की, सो विल टॉक अबाउट कि हाउ डू यू एक्चुअली एग्जामिनेशन कैसे करते हैं आई की फॉर द पेशेंट. लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. ठीक है, और वो एटलीस्ट ये डायग्राम्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि इफ वी आस्क अ पर्सन to look straight, so that is the normal position जिसको हम कहते हैं कि normal ये आई आपको eyeball दिख रहा है, and these are the upper eyelid and lower eyelids, and you see upper eyelid and lower eyelid are actually covering the corneal surface of the eye quite much, you know. But if you look at a disease condition called proptosis, देखिए इसमें क्या हो रहा है, eyeball protruded है, इस तरह के जो इसका limbus का एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया, you know these terminologies from my anatomy and physiology lectures. So limbus का एरिया जो है अब वो covered नहीं है एक्चुअली अपर और लोअर लिड से, और अब आप जब आप देख रहे हैं तो काफी सारा स्क्लेरा जो है वो भी एक्सपोज है. देखें अपर लिड काफी पीछे है और लोअर लिड इस तरह से है कि वो थोड़ा सा कवर कर रहा है, लेकिन अपर लिड जो है दैट इज काइंड ऑफ रिट्रैक्टेड. सो दिस सिचुएशन इज नोन एज लिड रिट्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड प्रोप्टोसिस. सो इसमें आई इज बल्जिंग फॉरवर्ड. सो इंस्पेक्ट फ्रॉम फ्रंट एंड साइड, पेरी ऑर्बिटल एजिमा, corneal ulceration and proptosis, exophthalmos या lid retraction. तो आंख कहीं बल्ज तो नहीं हुई यानी proptosis और lid retraction तो नहीं है. कॉर्निया पे एग्जामिन करें, कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ. ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. फिर आप देखेंगे आई की मूवमेंट किस तरह से है, रेंज ऑफ मूवमेंट कैसी है, लिड लैग तो नहीं है ऑन डिसेंडिंग गेज. पेशेंट को हम जब कहते हैं आंख नीचे करो ऊपर करो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप नॉर्मल डिसेंड होता है तो नॉर्मल डिसेंड में जब आंख नीचे करता है पेशेंट नीचे की तरफ यूं, सो ये जो अपर और लोअर आईलिड्स हैं ये स्टिल कवर कर रहे हैं कॉर्नियल सरफेस को, स्क्लेरल सरफेस को. लेकिन यहाँ देखें, यहाँ जब पेशेंट ने आंख अपनी नीचे की है, सो ये वाला जो स्क्लेरा का पोर्शन है वो एक्सपोज्ड है और आईलिड ने उसको कवर नहीं किया हुआ. सो दिस इज कॉल्ड लिड लैग डिसेंट, यानी लिड लैग को कंफर्म करती है ये चीज. ठीक है, कि इसकी जो लिड है वो रिट्रैक्टेड है ऊपर की तरफ. यू ऑल्सो चेक इन दीज पेशेंट्स प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, और इसमें बेसिकली होता ही है कि जो अफरेंट डिफेक्ट है उसकी वजह से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट फर्दर ऑन स्विंगिंग लाइट टू द अनअफेक्टेड आई. एक्चुअली मैं अभी यहाँ इसको बहुत ज्यादा टच नहीं कर रहा, बट वी विल टॉक अबाउट दिस इन मच मोर डिटेल जब हम थायराइड की पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें आई एग्जामिनेशन की बात करेंगे. ओके, सो विल सी के व्हाट इज द प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेंजेस इन अ पर्सन विद इश्यूज विद थायराइड. देन विजन की हमने ऑब्वियसली चेक करना है कि एक्यूडी क्या है, नंबर चेंज तो नहीं हुए, and you need to see if there is papilledema or not. So the point is that eye examination is an important point in Graves' ophthalmopathy. So thyroid problem में eye examination detailed होनी चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे कुछ hint दी है कि sit opposite to the patient, you and the patient cover the opposite eyes. So आपने ये देख रहे हैं opposite eyes cover की हुई हैं, आपने भी करनी है. Bring red pen slowly into the view. Actually ये मैं आपको बताऊंगा जब हम थायराइड करेंगे. So यहाँ पे टेक होम मैसेज ये है कि जो पॉइंट नंबर 6 था जिसमें हेड का एग्जामिनेशन हमने करना था, इसमें वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गन टू एग्जामिन इज द आई इन ग्रेट डिटेल. ओके, अच्छा, फिर नंबर 7 में जो नेक का एग्जामिनेशन हमने किया था, दैट वाज नंबर 7 ना, उसमें वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि नेक के इश्यूज क्या हैं. सो वहां बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर एन इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड. सो यहाँ भी थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं कि इंस्पेक्ट फ्रॉम साइड टू साइड, ऑल्सो फ्रॉम फ्रंट, पैल्पेट फ्रॉम बिहाइंड. पेशेंट के पीछे आपने खड़े होना है, थायराइड को पल्पेट करके पेशेंट से बाकायदा प्रॉपर इसकी जो एग्जामिनेशन की ट्रिक है कि आस्क द पेशेंट टू स्वेलो सो दैट यू कैन सी इफ any lump is moving or not. Thyroid examination पे अलग एक पूरा एक topic है, so I'll make a different video on that. But here, just to show you what are the steps to examine thyroid, you have to inspect, you have to palpate. Then you also have to auscultate. आपने stethoscope रखना है यहाँ पे, और stethoscope रख के thyroid के ऊपर अपने कान में लगा के उसको सुनना है कि कहीं इसमें बहुत ज्यादा ब्रूई तो नहीं है, which means कि इसकी बहुत ज्यादा vascularization तो नहीं है, बहुत ज्यादा blood supply बढ़ तो नहीं गई, because that is feature of some of the very important disorders. Then you also have to percussate, अपनी finger रख के इस पे percussion करनी है. तो ये सारे important steps हैं: inspection, palpation, auscultation, percussion,
ये जो साइंस यहाँ लिखी हैं, these signs we will cover when we talk about the thyroid illness later on in this chapter. Okay, so abnormal findings, diffuse, अगर पूरा enlarged है then you call it goiter. It can be multinodular. You can feel different nodules upon palpation. There can be one single nodule in case of a cancer or a benign tumor, adenoma. So we will talk about these when we do the thyroid in detail. But I hope you now have the flavor that what we are talking about. We have started medicine of endocrinology from Davidson, and that is the portfolio जो हमको पूरा cover करना है. Today's topic was to talk about the clinical examination, how to approach a patient with endocrine problem. Remember, always approach a patient in a systemic manner. अगर आप haphazard patient को approach करेंगे, then you'll be lost. So if there is any lead, if the patient is talking to you and giving you any lead that makes you think कि इसको कोई endocrine problem है, जैसे ही patient आपसे बात करता है, आपके दिमाग में ये dozen issues start होने चाहिए, 12 issues start हो जाने चाहिए. You have to observe the patient, you have to look at the hands of the patient, you have to have a look at the skin, then pulse, then blood pressure, head region, neck region, and then you have to always talk about how the breasts are doing, how the body fat is doing, what is the position of the bones, genitals and legs. So these are the dozen issues of approaching an endocrine patient. Okay, so with this I stop the video here, और next time जब आपसे मुलाकात होगी then we will be talking about an overview of endocrinology जिसमें physio, patho और कुछ basic बात करेंगे, and then we will start and pick up each and every endocrine organ और उससे associated medical issues. Okay, so till then अपना ख्याल रखिएगा, take care of yourself.